So our main topic is DNA fingerprinting और इसका इंट्रोडक्शन हमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे. DNA and its structure. We all know that DNA is an abbreviation of deoxyribonucleic acid and it represents blueprint of human genetic makeup. So it acts as hereditary material and all features, all characteristics, they are controlled by DNA. DNA is composed of 4 types of nucleotides, and these are adenine nucleotide, guanine nucleotide, cytosine nucleotide, and thymine nucleotide. And adenine is abbreviated as A, guanine as G, cytosine as C, and thymine as T nucleotide. Now, each nucleotide is composed of 3 substances. One is a pentose sugar, which is called deoxyribose. Then is a phosphate group and one of the nitrogenous base. And these one of the nitrogenous bases, they are adenine, guanine, cytosine, or thymine. So it is actually the type of nitrogenous base which determine the type of the nucleotide. The rest 2 substances, they are same. I mean, sugar and phosphate group, they are same. So a nitrogenous base, a sugar and phosphate group, they combine with each other to make a nucleotide. These 4 types of nucleotides, they unite with each other through phosphodiester bonds, and in this way a nucleotide chain is formed. And 2 nucleotide chains, they coil around each other to form a double helical DNA structure. A in one chain, A mean adenine in one chain, that makes hydrogen bonds with thymine on the other chain, and guanine in one chain that makes hydrogen bonds with cytosine in the other strand. So in this way, through these hydrogen bonds, these 2 chains, they are combined with each other. And this is shown in the diagram on the left side. We can see here that we have 2 chains. So this is one chain which runs in 5' to 3' end, while this is another chain which runs in 5' to 3' end. So here we can see that in one chain, this is guanine nucleotide, and it is combined with cytosine base on the other chain, और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. तो जहाँ पे भी एक चेन में गुआनिन आएगी, दूसरी चेन में साइटोसिन, या अदर वे राउंड, अगर साइटोसिन आएगी तो दूसरी चेन में गुआनिन, और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं जो इन दोनों बेसिस को आपस में कनेक्ट करती हैं. और इसी तरह अगर एक चेन में एक नाइट्रोजन बेस एडेनिन है और दूसरे चेन में उसके सामने थाइमीन न्यूक्लियोटाइड या थाइमीन बेस होगी, और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ये होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं. सो इस तरह ये 2 चेन आपस में मिलते हैं और मिलके ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो ये बनाते हैं. यहाँ तो ये दिखाया है कि 2 चेन कैसे लिनियरली अरेंज होते हैं, मगर ये दोनों चेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक डबल हेलिक्स फॉर्म में होते हैं. यानी ये इस तरह, ये अगर एक चेन है तो इसके साथ दूसरा चेन यूं मिलके ये एक डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है ये बनता है. सो एक तरफ एक चेन, दूसरी तरफ दूसरा चेन, और दोनों चेन एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए होते हैं एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में. ह्यूमन जीनोम इज फॉर्म्ड ऑफ about 3 billion base pairs, and among these 3 billion base pairs, 99.9% are similar in all individuals, in all human beings. So 99.9% of these 3 billion base pairs found in human beings, they are same, while there is difference of only 0.1%. These 0.1% differences in DNA, they are responsible for different types of human beings, and these only 0.1% of DNA of one person is different from DNA of other person, and it is this 0.1% DNA which can be used to distinguish one person from another person. And DNA fingerprinting is a molecular technique
which is used for identification of individuals on the basis of differences in DNA sequences and on the basis of 0.1% differences in DNA. So rest 99.9% are similar in whole of the human beings, in all of the human beings. So we all are different from each other due to this 0.1% DNA. These sequences are unique to each individual with the exception of identical twins. ज़ाहिर है जो identical twins होते हैं उनमें सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है, उनमें जो है ये जो 0.1% डिफरेंसेस भी होते हैं वो भी नहीं होते. So they are all 100% same. They are 100% similar to each other in phenotype as well as in genotype. This technique of fingerprinting was invented by Alec Jeffreys as variations in human DNA in the form of unique sequences which were called as microsatellites. So these 0.1% differences in DNA, they were actually responsible for differences in all types of human beings, and this difference was due to DNA which was named as mini satellites. It detects lots of mini satellites in the genome to produce a unique pattern to each individual, and this is actually DNA fingerprinting. Like we have fingerprints on the tips of our fingers, in the same way that 0.1% differences in DNA, they are unique to each individual. So just like fingerprinting, fingerprints, DNA fingerprint is something one is born with and it cannot be changed. ये ज़ाहिर है जैसे इंडिविजुअल्स हर एक इंडिविजुअल के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया यूनिक है. सो वी आर बॉर्न विद दिस यूनिक DNA fingerprint, and it consists of unique sequences of nucleotides for each individual. And DNA profiling or DNA fingerprinting is used for parentage testing and criminal investigation. So इसको हम use कहाँ करते हैं? ज़ाहिर है कई दफ़ा डिस्प्यूटेड पैटर्निटी केसेस होते हैं, डिस्प्यूटेड मैटर्निटी केसेस होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, या इसी तरह जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कहीं अगर बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ वो जो क्रिमिनल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका ताल्लुक किस फैमिली से है और उसके पेरेंट्स कौन हैं, वो कहाँ से हैं, तो इनके लिए इनको यूज़ किया जाता है. This technique is now being employed worldwide in forensic science to identify the suspects and decide paternity cases as well as immigration disputes. Sources of DNA used in DNA fingerprinting, they may be hair, blood, semen or other types of body tissues. Different तरह के जो sources हम use करते हैं, ज़ाहिर है जो क्राइम सीन्स के ऊपर देखे जा सकते हैं या वहाँ से हमें मिलते हैं. एंड दिस टेक्निक इज ऑल्सो नाउन एज जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, DNA टाइपिंग एज वेल एज DNA प्रोफाइलिंग. सो डिफरेंट तरह के नाम जो है वो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये हमें आइडेंटिफाई करने में क्राइम सीन्स पे या पैटर्निटी केसेस के ऊपर या इसी तरह बाकी मामलात में हमें एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं.